Having said that, yes, try korichi di tinta book padhiya pai. So I've tried to collect as much knowledge as possible and notes भी तुमको comprehensive जंती हो मिलू सेटा मु try करची. Okay, so let us discuss Hindu law. Okay, Hindu law ପରେ ଆମେ Muslim law को भी पुणी ଯିବା. Now remember ଯଦି ମୁଁ Hindu law କହିବାକୁ ପଢିବାକୁ ଯିବା, first we have to know that majority or not majority, some part of Hindu law is in fact uncodified. Okay, personal law majorly uncodified कहले भी it will not be an overstatement. Personal law uncodified हमारा reason होची majorly uncodified, except of course after independence बहुत गुड़े आसिला जिंदगी हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ये सब जिनस आसिकी 1955 1956 आड़कू कोडिफाई करले सब किसी पार्ट्स. बट बिकॉज इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री एंड मल्टी रिलीजियस कंट्री, सेतबई इट वाज ऑलवेज थॉट दैट ठीक अछि कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल लॉ ए सब रे हमें यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल करेबा, बट पर्सनल लॉ को हमें तांकर रेस्पेक्टिव पर्सनल लॉज ऊपर छाड़ दबा. ओके, सेतबई पर्सनल लॉ माने कोन कोडा को मैरिज हला, सक्सेशन हला, मैरिज सक्सेशन, डिवोर्स, अडॉप्शन. ओके, ए सब एमते टाइप रो जिंसडा को पर्सनल लॉ रे जोड़ा आसुची. ए सब को कोन करा गला, इंस्टेड ऑफ कोडिफाइंग and making it uniform across all religions, it was thought that it is prudent to leave it to their personal laws respectively. तामाने जहार जे पर्सनल लॉ सेमती गवर्न करिवो आ हमें ताकू कोडिफाइड और यूनिफॉर्म करवा नहीं. Of course, having said that, DPSP mandates that uniform civil code is the need of the hour, and the present government is also hellbound on doing that, and I will not be surprised if this stunt is also pulled off. Okay, and all the laws irrespective of the religion relating to personal laws will be one. Okay, but mu कहली yes majorly uncodified thila, but after independence we have tried to codify some aspect. After independence hame kon करछु, some aspects we have codified, some aspects we have codified. Okay, and देखिबा जदी हिंदू लॉज रो मेजॉरिटी एक्सेप्ट हमरो कोडिफाइड करछंती, किंतु कोडिफाइड करिनांती मुस्लिम लॉ रो एते पार्ट कोडिफाई हे नाही. ओके, सो एती होची हमरो. If I have to introduce you to the topic, then this is my introduction, that yes, it is not codified majorly. Yes, some part of it is codified. Okay, now I wanted to discuss who is a Hindu here, but I'll discuss it later. First topic aji hame padhiba is sources of Hindu law. Sources of Hindu law. Okay, what a must all माने कहया गले प्राय टाइम एटा गोटे क्वेश्चन भी आस जाउची. ओके, सोर्सेस एंड स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, टू क्वेश्चंस जोड़ा की पूरा आसी जाउची. वन ऑफ देम इज sources. Okay, sources, there are majorly two classification of sources. Two classification of sources. One ancient and second is modern. One is ancient and second is modern. Okay, now ancient sources कौन, modern sources कौन पढ़िबा.
एंशिएंट टा बेसिकली बिफोर कोडिफिकेशन, पूरा कोडिफिकेशन बिल्कुल भी जतले हेना थिला, बिफोर कोडिफिकेशन सब बेले एंशिएंट गुडा को थिला ही, एंशिएंट वेयर दी प्राइमरी सोर्सेस. ओके, द एंशिएंट वेयर दी प्राइमरी सोर्सेस बिफोर कोडिफिकेशन. तापर कोडिफिकेशन पर यस मॉडर्न सोर्सेस किछि किछि सोर्स हैला. ओके, नाउ these ancient sources are to be classified into four categories. Four categories. Okay, one shruti, second smriti, okay, third digest and commentaries, and fourth is customs. Okay, shruti, smriti, digest and commentaries and customs. Okay, एटा होची हमरो कोन ancient sources. सेमति जदि modern sources कहबा कोन, modern sources, one is judicial decision, second is legislation, and third is justice, equity and good conscience. Justice, equity and good conscience. So three categories होची कोन, modern sources. Okay, so shruti, smriti, digest, commentary and customs. A modern होची judicial decision, legislation, justice, equity and good conscience. Okay, now first आसीबा हमें कोन shrutis. Ancient sources रो चारटा को पढ़िबा. One is shruti. What is shruti? Okay, basically Hindu law को हमें सबले it is considered as a divine law. आपको हमें divine law को ता माने God जहा कहिसंती से अनुसार हम ताकू law करूची, law बोली धरछु बोली कहूची. Okay, so basically God has directed to whom? To the sages who have attained spiritual heights. जो माने जो मोक्ष प्राप्ति कर देचंती से स्टेज रे पहुंच जाइचंती जो सेज बने संत माने, not like the false ones, the ones who actually have attained great spiritual heights. तांकू God करो जोटा direct revelation regarding the personal laws, regarding the personal space, से गुडाक होची वेदरे कंटेन हेची, and श्रुतिर literal translation होची what was heard. Okay, what was heard. तामने श्रुति गुडा कोन, श्रुति गुडा होची बेसिकली what was heard माने कोन, की कोए गॉड कहिसंती जोडा सेजेस को से गुडा को श्रुति रे अछि. केमती श्रुति को बेसिकली श्रुति जहा माने वेद रे सडा को लिखाई छी ताको ही हमें कहूचे श्रुति. एंड श्रुतिस आर द sacred and pure utterances that have been enshrined in Vedas and Upanishads. वेदा उपनिषद रे जहा sacred और pure utterances जहा कुहाई छी और जहा लिखाई छी से गुडा को कुहाउची कोन हमरो श्रुतिस. ओके, श्रुतिस. क्लियर. नाउ Vedas are of केतरा यो वेदा की कह परियो Sir, 4 Vedas. 4 types. 4 Vedas. One is Rig, one is Yajur, one is Shama,
and one is Atharva. Okay, these are the major four Vedas. These are the major four Vedas. Okay, now ସେମିତି actually ଅଲଗା ଅଲଗା ବେଦ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ବିଷୟରେ କହିଛି. ଓକେ, ସୋ ବେସିକାଲି କିଛି କହିଥିବ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫ, କିଛି କହିଥାଏ ୱେ ଅଫ ଥିଙ୍କିଂ, କିଛି କହିଛି wisdoms, ସେମିତି ଅଛି. ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ସିଷ୍ଟମାଟିକଲି ଲ ଲେଖା ହେଇନି. some of them are laws, some of them are considered to be laws. Okay, ଆଉ they contain what, as I told you, ritual, sacrifices, ତାପରେ ceremonies, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ, way of life, way of thinking, customs, wisdom, and तार भितरे certain rules of law भी अछि. Okay, so we did not discuss really कि का भितरे କ'ଣ अछि, बस yes ये सब जिनस अलग अलग वेदरे कंटेन हेकी अछि. सेंती उपनिषद केतटा की कहि परियो? Does anyone know? 108 known Upanishads are there. जदि आमे कहिबा, जदि आमे ना सहित जानिबा तले 108 टा known Upanishad अछि. ओके, बट एक्चुअली देखिया गले ताटो अधिका भी अछि. बट 108 known Upanishads अछि. ता भितरु फर्स्ट 11 10 11 are the major one. ता भितरु फर्स्ट 10 11 I think are the major Upanishads. Okay, major Upanishads. So आपनकर जोड़ा को मुख्य उपनिषद और प्रिंसिपल उपनिषद को आ जाए सेटा होची फर्स्ट 10 11. ओके, बाकी सब जाक होचंदी लिखि दे पारिबे से 10 11 उपनिषद कोन बस दरकार नहीं. बट खाली आपन के कहि भी दोची 10 11 उपनिषद होची कोन, ईशा, केन, कथा, प्रश्न, मुंड, मंडुक्य, तैत्रीय, ऐतरेय, चांडोग्य, बृहदरण्यक. ओके, एंड आउर भी ओटे जदि कहबा होची श्वेत वस्त्र आउर भी अछि कोन, कोसिटाकी आ कोन, मैत्र यनिया. तेरडा माने मोर फर्स्ट 12 13 कहली. ता भितर एक्चुअली 10 11 10 ए जो 11 पर्यंत होची मेजर सोर्सेस जोठो हमरो आसीची. ओके, सब जाको भी हमरो 13 टा को जदि हम कहबा भी मेजर सोर्सेस, सो 10 to 13 एक्चुअली धरले बेटर. 10 to 13 मेजर सोर्सेस अछि. दीज आर दी मेजर उपनिषद्स जदि हमें जानिया को जिबा. ओके, बट रिमेंबर को भी वेद को भी उपनिषद रे these are of course these are treated as voice of god. आउ को पीरियड भीतर एटा अछि को होची 4000 बिफोर क्राइस्ट टू 1000 बिफोर क्राइस्ट. एई पीरियड भितरे सब जाको आसीची. माने क्राइस्ट को जन्मर 4000 वर्ष पूर्वरु 1000 वर्ष पूर्व मझिरे से जो 3000 वर्ष भितरे एई वेदस गुडा को सब आसीची बोली कुहा जाए. एंड these were considered as the primary source. So where the primary source before codification.
बिफोर कोडिफिकेशन हैपेंड किसी भी कोडिफिकेशन हवा आगु एटा ही थिला प्राइमरी सोर्स क्लियर नेक्स्ट आसीबा हमें कोन नेक्स्ट सोर्स इज स्मृतिज स्मृति 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 सेंस थिला व्हाट वाज हर्ड सेमते एटा होची व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड लिटरली ता ट्रांसलेशन होची व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड ओके नाउ एथरे एटा कोन मेमोरी ऑफ सेजेस सेजेस को मेमोरी रु जहां को हमें रिपोजिटोरीज ऑफ सेक्रेड रिविलेशन तांको को कहीं से सबू जानचंती से सबू सुनिचंती तेणु तांकर मेमोरी रु आमे तांको एटा भी गोटे सोर्स को तांका मेमोरी रु से जहा मन रखचंती आफ्टर रीडिंग और आफ्टर हियरिंग फ्रॉम गॉड्स एज द केस में भी किछि किछि ऋषि मान तो डायरेक्टली सुनिचंती गॉड बोली कहउची आउ किछि जण से वेद पढ़ी की जहा सुनिचंती माने बुझचंती सो तांकर मेमोरीज रु जहा अछि ताकू भी आमे गोटे सोर्स बोली धरू आउ स्मृति को भी क्लासिफाई करा जाए टू कैटेगरीज रे गोटे होची अर्ली स्मृति स्मृति व्हिच इज कॉल्ड धर्म सूत्र और सेकंड होची लेटर स्मृति जाको होची धर्म शास्त्र ओके अर्ली स्मृति धर्म सूत्र और लेटर स्मृति धर्म शास्त्र ओके धर्म सूत्र जो अच्छी सेड़ा को कौन कि अर्ली स्मृति जहाँ कहे और अर्ली स्मृति व्हाट आर दोस ओके तार अप्रोक्सीमेट एज जदि हम कहबा केबे केबे भीतर हेची सो दा होची 800 रु 200 बिफोर क्राइस्ट ओके सो 800 to 200 बिफोर क्राइस्ट रे अच्छी धर्म सूत्रस आउ सेउडा को कोन दोज आर दी 800 to 200 गुडा कोची धर्म सूत्रस आउ सेउडा को मोस्टली जदि हम देखिबा मोस्टली दे आर रिटन इन प्रोज फॉर्मेट माने कोन पूरा एमती बही गप भलिया लिखाई छी समवेयर इन वर्स सम रिटन इन वर्स टाइप रे भी लिखाई छी वर्स फॉर्मेट रे भी लिखा है छी ओके नाउ धर्म सूत्र जुडा का मेन कोन सेंती Just a second. Mostly written in prose format, some written in verse. Okay. So माने basically कौन deal करंती धर्म सूत्रस माने they deal with duties of men in their various relation. They speak about duty of men in their various relations. Okay. Now किछि मेन धर्मशास्त्र कोडा को सेटा भी जानि थांतु मेन धर्मशास्त्र बड़ा लागुनी हम पढुचे हिस्ट्री पढला लिया बट दिस इज लाइक दैट ओनली ओके वन इज गौतम फर्स्ट होची गौतम धर्म सूत्रस का भितरु जोडा का मेन सेडा को होची फर्स्ट होची गौतम
गौतम धर्मसूत्र ताकू कुआ जाए ओल्डेस्ट, एटा को ओल्डेस्ट वन। ओके, कौन डील करे? लीगल एंड रिलीजियस मैटर, लीगल एंड रिलीजियस मैटर डील करे। एटा को वेद स्कूल रु? श्याम वेद स्कूल रु अछि एटा गौतम धर्मसूत्र। गौतम सामवेदीय थिले। तो सब ब्राह्मण अलग अलग वेदर ब्राह्मण थांदी एंड तांको हिसाब रे हुए। सब तो सेजेस सब ब्राह्मण ही करचंदी। सेंदी मु होची ऋग्वेदीय ब्राह्मण, आमे होची ऋग्वेदीय ब्राह्मण। सेंदी गौतम थिले कोन? सामवेदीय ब्राह्मण। आउ से एटा करथिले फर्स्ट धर्मशास्त्र होची गौतम धर्मशास्त्र। सेकंड बौधायन, बौधायन ये थिले कृष्ण यजुर्वेद स्कूल रु, यजुर्वेद स्कूल रु थिले ये के बौधायन। से जो तांकर धर्मसूत्र रे कोन लिखा हितला? बहुत जिंस मैरिज, sonship, adoption, inheritance ए सब विषय लिखा हितला। थर्ड अपस्तंभ, अपस्तंभ से भी सही कृष्ण यजुर्वेद स्कूल, कृष्ण यजुर्वेद स्कूल रु ही थिले। आउ this is called the, this is in fact the best preserved धर्मसूत्र। काहे कि ना पूरा as it is अछि, बहुत बड़ा तो डिस्ट्रॉय हो जाई छी, बट दिस इज as it is, जेमति थिला सेमति ही अछि। ओके, फोर्थ वशिष्ठ, फोर इज वशिष्ठ। वशिष्ठ ऋग्वेदीय थिले, ऋग्वेद ब्राह्मण थिले। आउ इट इज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड, ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड। बहुत कम तार वर्षन ही बाकी अछि, माने हमें देखि पारछे। फिफ्थ विष्णु, विष्णु आकु हमें पॉपुलरली हमें विष्णु स्मृति भी कहू, विष्णु स्मृति भी कहू। एंड इट इज क्लोजली कनेक्टेड, क्लोजली कनेक्टेड विथ मनुस्मृति, जोटा कि हम परे पढ़िया, एंड यज्ञवल्क्य स्मृति, जोटा कि दीटा पॉपुलर कमेंट्रीज पढ़िया। हम जतले कमेंट्रीज पढ़िया एटा ता सहित दीटा रिलेटेड भी। ओके, हम कमेंट्री कहूची कोन? धर्मशास्त्र भी, धर्मशास्त्र ता सहित माने रिलेटेड। फिफ्थ सिक्स्थ हरिता, हरिता से कौन कहती? धर्म स्नातक, स्नातक माने जो क्वालिफिकेशन एंड ऑल, क्वालिफिकेशन, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य ए सब विषय रे कहती। ओके, हाउ इन फैक्ट ए सबु गुडाक जो रूल्स ऑफ लॉ अछि एबे भी दे आर स्टिल गवर्निंग हिंदू लॉ। एंड बिफोर कोडिफिकेशन तो एमाने प्राइमरी सोर्स थिले। सो हम पढ़ले फर्स्ट कोन? धर्मसूत्र। धर्मसूत्र गला कोड गला? हां, धर्मसूत्र। एबे आसीबा धर्मसूत्र परे आसीबा धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र, now धर्मशास्त्र जाको कह जाय कोन? लेटर स्मृतिज भी कह जाय। सेडा को सब थिला कोथरे कहले? पोएट्री फॉर्म रे, पोएट्री एंड दैट टू रिदमिक पोएट्री, रिदमिक पोएट्री जाको कह जाय मेट्रिक वर्सेस। माने एमि चार लाइन थिबो, एक दूसरे सहित पूरा राइम करथबो, सो दैट यू कैन सिंग इन फॉर्मेट ऑफ ए सॉन्ग, ऑलमोस्ट लाइक दैट। रिदम रे सेटा चलथिबो, सेही फॉर्मेट रे लिखा होतला धर्म शास्त्र गुडाक। आ ए गुडाक लेटर स्टेजेस रे लिखा हिची। ओके, बट these were unlike धर्मसूत्र, these were more systematic and clear। पूरा ए विषय रे या धर्मसूत्र रे कोन सब मिसा मिसी कर लिखा होतला, एथरे पूरा इट इज मोर सिस्टमैटिक एंड क्लियर। धर्मशास्त्र तीनटा टाइप को डिवाइड हिची।
These are divided into three types. Three types. One, achara. Achara जोड़ा कौन करे? It deals with rules of religious observances. Second, vyavahara, which deals with civil law. Civil law. And third is prayaschita, which deals with penance or expiation. तामाने केमिति आपण रिलीजियस ऑब्जर्वेशंस करिवे ताको आचार कहउचंती, सिविल लॉ को जोडा गवर्न करचंती ताको व्यवहार कहउचंती, आउ जदि किछि भूल कर देले तारो पश्चाताप केमिति करा जिवो ता पई प्रायश्चित बोली कुआई छी. ओके, नाउ एई आचार और व्यवहार ऊपर बेसी कंसंट्रेट करचंती, जेमति कि मनुस्मृति से माने आचार और व्यवहार ऊपर कंसंट्रेट करचंती. सम पार्ट प्रायश्चित पेनेंस ऊपर भी अछि, बट प्रायश्चित मेजरली नारद स्मृति रे अछि प्रायश्चित. ओके, आउ यज्ञवल्क स्मृति गोटे अछि जोडा कि दीटा को डिवाइड करछि. नाउ कौन कौन ताले हमर होचंती धर्मशास्त्र भी मेनली देखिया गले तीनटा धर्मशास्त्र. एटा तुम तीनटा टाइप रो कहली, आउ धर्मशास्त्र भी मेनली तीनटा. यस, somebody is asking. कृतिका को Sir, Narada Smriti is the most recent one, which mostly deals with Vyavahara, the civil law part of. oh yes मु प्रायश्चित कहली. ट्रू Again. correct मु प्रायश्चित कहली. it is dealing with व्यवहार. उल्टा कहली मनुस्मृति होची 1 और 2, 1 और 3. Yes, sir. Yes. 1 और 3 आचार और प्रायश्चित मनुस्मृति. नारद स्मृति होची व्यवहार. ओके, सम व्यवहार भी मनुस्मृति रे भी अछि. मनुस्मृति एक्चुअली डील्स विथ 3, मेजरली आचार एंड प्रायश्चित, बट नारद होची व्यवहार, व्हिच इज द सिविल लॉ. ओके, नाउ तीनटा को स्मृति माने तीनटा को धर्मशास्त्र आर जो 3 मेजर धर्मशास्त्र होची कोन? 3 मेजर धर्मशास्त्र कोन? 1 होची मनुस्मृति, most controversial स्मृति you can ever imagine. Actually जदि किए पढ़ियो मनुस्मृति, and if you are a woman or belonging to backward classes, you lose your mind. Okay, जहाँ से लिखिचंती तांकर भितरे लिखिचंती जेमती स्त्री लोक मानकु बाडै की रखिया कथा, ड्रम्स और वुमेन को एकाठी कंपेयर कराई छी. जे ड्रम को जेमती बाडैले सेटा ठीक रहबे, वुमेन को बाडैले भी सेमती ठीक रहबे. ओके, things that you can't even imagine. Okay, so Jabio, it is simply the most studied and earliest metrical work of Dharma Shastra. I think there was a beautiful article on Quint, I think about this controversy. I mean, the sexism part, जहाँ भी मनु जेमती थिले से सबू इधर लिखाई जी. I'll share that article with you. Give it a read. Very good article. Okay, but it is the most studied and earliest metrical work of Dharma Shastra textual tradition of Hinduism, जो थे कि आपण systematic and cogent collection थिला rules of law थिला. ओके, सेतरे सबु रूल्स, इंस्टीट्यूशन, कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ सबु लिखाई छी. कोन लिखाई छी? कॉन्सेप्ट्स ऑफ लॉ, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस. ओके, सबु लिखाई छी
आउ आ ऊपर ही ए जो मनुस्मृति ऊपर भी सेवरल कमेंट्रीज लिखा है जोड़ा को हमें परे पढ़िबा कमेंट्रीज रे सेवरल कमेंट्रीज भी आरी ऊपर ही लिखा है ओके सेकंड इज जेमती कहली एटा काहू विषय डील करे मेनली आचार आउ प्रायश्चित केमिति आपण करिवे आउ जदि किछि भूल कले तार पेनेंस कोन जेमति कि लिखा है जदि गोटे झीटे जे कि गोटे लोअर कास्ट रो जा लिखा है मु किछि कहनी लोअर कास्ट रो जे कि गोटे अपर कास्ट रो पुओ को बाहा होछि देन ता पई इट्स ए हेवनली वर्क बोथ विल गो टू हेवन बिकॉज सेठी गोटे कास्ट रो उद्धार होछि बट जदि गोटे झीटा जे कि अपर कास्ट रो सी जदि गोटे लोअर कास्ट रो पुओ को बाहा होछि then what is the punishment? Does anyone know what is the punishment? Does anyone know prescribed by Manusmriti? The punishment is death. Okay, so the punishment no prayashchita, the only punishment is death. Jetale gote upper caste ro jio gote lower caste ro jio को पुओ को बाहा होछि बिकॉज़ सेटा गोटे कास्ट रो संस्कार नो कास्ट रो तिरस्कार होला again like that बहुत सारा stupid जिंस लिखा है जी बट नेवरदलेस लिखा है जी ओके सो आचार प्रायश्चित ए दिटा को डील करूची कोन मनुस्मृति नेक्स्ट आसिला कोन यज्ञवल्क्य स्मृति यज्ञवल्क्य स्मृति एटा केबे लिखा है जी 4th रु 5th सेंचुरी रे लिखा है जी ओके 4th रु 5th सेंचुरी भितरे लिखा है जी नाउ सी रे आउ एथरे ताकू कोन कहै जाय दिस इज द बेस्ट कंपोज्ड धर्मशास्त्र भी लिखा जाए कहा जाए ओके सुपीरियर vocabulary and level of sophistication आ भितरे अछि ओके बट सब बेले मन रखंतु मनुस्मृति को आगो अथॉरिटी दिया जाए मनुस्मृति परे ही आसीबो अथॉरिटी हिसाब रे जदी अथॉरिटी दबा काहा को अधिक अथॉरिटी दिया जाए मनुस्मृति को अधिक अथॉरिटी ता परे ही यज्ञवल्क्य स्मृति को दिया जाए ओके यज्ञवल्क्य भी मनु जहा जहा डील करथिले से सब को भी से प्रीसियस माने पूरा प्रिसाइजली डील करचंती ओके बट सेथरे हाँ बट गोटे जदि मेन डिफरेंस देखिबा मनु कहिथिले कोन मनु कहिथिले जे मनु गोटे डिवाइन राइट ऑफ किंग ऊपर कहिथिले किंग रो गोटे डिवाइन राइट अछि बोली कहथिले जोडा को यज्ञवल्क्य कहउनथिले ओके यज्ञवल्क्य कहउथिले कोन रूल ऑफ लॉ यज्ञवल्क्य कहउथिले इवन किंग is subordinate to law which is in fact subordinate to law okay किंतु मनु कहउथिले नाही राजा जदि भूल करियो राजा पे पनिशमेंट नाही राजा को गोटे डिवाइन राइट दिया होतला ओके जदि हम देखिबा दैट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन मनु एंड यज्ञवल्क्य okay third is Narada Smriti जोड़ा कि 5th through 6th century CE रे अछि just a second हाँ
Just a second. Okay, leave it. हाँ, नारद स्मृति होची लास्ट ऑफ द 3 मेट्रिकल धर्मशास्त्रस. ओके, एंड एथरे भी सही बहुत सिस्टमैटिक एंड एग्जॉस्टिव treatise on rules of law. ओके, एक्चुअली देखिया गले एटा ही लॉ थिला. फर्स्ट लीगल कोड जदि मु कहिबी, दिस इज द फर्स्ट लीगल कोड जोतरे कि इट्स मोस्टली फ्री फ्रॉम मोरल एंड रिलीजियस फीलिंग्स. बाकी तो जो दीटा का थिला हेरा खाली मोरल और रिलीजियस फीलिंग्स रे मेजर गवर्न करतला. ओके, बट दिस इज द फर्स्ट लीगल कोड जोतरे कि मोरल और रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सक्लूड करके व्हाट इज राइट, व्हाट शुड बी डन सेडा कराई छी. ओके, एंड एज आई टोल्ड यू, इट डील्स विथ व्हाट की कहि परिबो, इट डील्स विथ समबडी क्रिएट का कहितला, बट आउ की को कोन इट डील्स विथ व्हाट. आचार व्यवहार प्रायश्चित कोन डील करे आ भितर. प्रायश्चित. प्रायश्चित, करेक्ट. प्रायश्चित नो म पुणी भूल No, कर sir, व्यवहार. पुणी भूल कर मु भी भूल थर कहिथिल तमे भी चले जा. व्यवहार, it deals with व्यवहार. ओके, एंड आचार प्रायश्चित एते डील बिल्कुल करे नाही नारद स्मृति. बट मानु आपर आचार प्रायश्चित छडा व्यवहार को भी टिके टिके पस जाइछन. सबुडी पसंद सी सबु तांगर. आई विल सेंड दैट आर्टिकल, प्लीज go through it. It's a very beautifully composed article. One of my friend who works as the one of the chief editors of Quint, if you have heard, Quint Seti say article ta likhichi. So you can please go through that. I'll share it. Just remind someone, please remind through a text after the class. Okay, next is digest and commentaries. आसिगला हमर कोन सरीगला हमर धर्मसूत्र स्मृति रे सरीगला धर्मसूत्र धर्मशास्त्र सब हम पढ़ी गले. एबे आसीबा हमें कोन डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज. डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज. ओके, नाउ डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज कोन पई आसिला जे स्मृति गुडा को बहुत बड़े टाइम रे एम्बिगुअस थाए and conflicting with each other. Okay, सेठी दरकार हला कि गोटे सिस्टमैटिक जिंस रहू, सब जाको एसिमुलेट करी कि मिसई कि गोटे रूल ऑफ लॉ गोटे कर दियो, सो दैट सेठी हमें एटलीस्ट जानी परिबा. ओके, सो these are basically interpretation of smritis. Interpretation of smritis. Smriti ru asila smriti, smriti ru asila digest and commentaries. Interpretation of smritis जो थरे कि कौन कराई छी सिस्टमटाइजेशन कराई छी स्मृतिस को आउ एसिमिलेशन सिस्टमाइजेशन और एसिमिलेशन ऑफ लॉ कराई छी. ता द्वारा कोन हला जो गोटे डाइजेस्ट राइटर्स और कमेंटेटर्स जो माने अछन से माने गोटे कमेंट्री और डाइजेस्ट बनेले जो थरे कि समाने पूरा एग्जैक्टली समान तो तीनटा को पढिछन, तीनटा करे मिसई कि कोन रूल्स बाहरिबो सेटा को से करी देले. ओके, बट बेले बेले बहुत जण मनु आउ यज्ञवल्क्य को फॉलो करी कि खाली करचंती, बहुत जण खाली नारद को फॉलो करी करचंती. सेमदी अछि मनु आउ यज्ञवल्क्य को फॉलो करिवारो they are major writers and commentators. Okay, because से टिके मोरल हाई ग्राउंड को अपील करचंती ना, से जो कोन कहली जे कट्टर हिंदूस
ताकू अपील करचंती बाय राइटिंग ऑल दिस सो सेत पई ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कमेंटेटर्स अछंती ओके नाउ आमे जतले पढिबा स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ सेतर भी आमे जानिबा बिकॉज़ मिताक्षर दया भागर भी दीटा ही these are two examples of commentaries only ओके अलगा भी commentaries अछि जेमति टीका भाष्य निबंध इन सब अलगा अलगा कमेंट्री अछि बा एंड सेठी मन रखितांतु जते बेले भी किछि कॉन्फ्लिक्ट आसीबो सेतेले कमेंटेटर्स को ओपिनियन को एक्सेप्ट करा जिवो जो काहे कि ना बाकी कोड तो हमें श्रुति गुडा को हमें खाली सुनिचे स्मृति गुडा को ताको मेमोरी को आउची बट कमेंटेटर्स रे देयर इज अ रिटन फाइंडिंग सो जदी किछि कॉन्फ्लिक्ट आसुची प्रिवी काउंसिल को ओपिनियन थिला जे जदी किछि कॉन्फ्लिक्ट आसुची अकॉर्डिंग टू प्रिवी काउंसिल कॉन्फ्लिक्ट्स रे नॉर्मली opinions of commentators are prevailed opinions of commentators are prevailed बोली कहूची ओके नेक्स्ट आसीबा हमें कोन कस्टम्स नेक्स्ट आसीबा कोन हमें कस्टम्स नाउ कस्टम्स कोन कस्टम्स फोर्थ आसीला कस्टम्स बेसिकली ओडी किछि लेखा आइ थाए नि किछि सुना हैनी कि कमेंट्री नुओ किछि नुओ बेसिकली इट्स अ ट्रेडिशन practice in society since ancient times कोडी किछि लेखा हैनी बट बहुत दिन हलानी जदी से चाली आसी बहुत दिन एटा प्रैक्टिस होची सोसाइटी रे ताकू हमें गोटे कस्टम बोली करि परिबा जेमदी साउथ साइड रे बरमपुर जदी के थिबो ताकर अछि यू कैन मैरी मैरी योर निज नीस को निज भाणीज को बाहाबार प्रथा गोटे अछि सो इट्स लाइक इट्स ए कस्टम इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कोडी लेखा हैनी ताकर कोडी रूल रे आपण कहबे जे खोजी के मते दियो कोडी लेखा हैछि सेंसे कहि परियो नै किंतु इट इज प्रैक्टिस्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स ओके सो तादरे कोन दीरा थाए दीरा जिंस थाए गोटे होची कंटीन्यूअस ऑब्जर्वेशन of people and second is followed by people continuous observe करथुए people माने आ ताकू फॉलो भी करथुए इनफैक्ट कस्टम को डिफाइन भी कराई छि कोथरे सेक्शन 3 ऑफ एचएमए हिंदू मैरिज एक्ट रे देखिया कस्टम को डिफाइन भी कराई छि कोन कोई छि any rule which has been continuously and uniformly observed for a long time and has obtained the force of law among people of हिंदू कम्युनिटी सो हिंदू कम्युनिटी रे जो रूल टाक कंटिन्यूअसली आ यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व करचंती गोटे लॉन्ग टाइम पाई ऑलमोस्ट लाइक इट हैज ऑब्टेन्ड ए फोर्स ऑफ लॉ ताकू ही कुआ जाए कस्टम ओके सो दैट गिव्स आउट टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज ए वैलिड कस्टम सबु कस्टम कोन वैलिड किछि भी गोटे जिंस कस्टम ना जो चलथिबो लाइक ए सती प्रथा तो गोटे कस्टम थिला बट दैट वाज abolished through a law सेमती कोडा वैलिड कस्टम सेउडा को केम कस्टम होवा पई किछि चेकलिस्ट को सने हिट करिया दरकार फर्स्ट होची कोन एंशिएंट होवा दरकार कस्टम्स शुड बी एंशिएंट माने must be existing in society since time immemorial समय
पूर्वरु माने आपण जेपर्यंत मन पडुची जदि भी आपण देखिबे कि आपण बापा को जदि पचरिबे कि आपण जेजे बापा को पचरिबे कि तांग बापा को पचरिबे समस्त को मन पडुची जे हां दिस कस्टम वाज देयर ओके एंड इंडियन कोर्ट्स गोटे टाइमलाइन भी कहि देछंती इंडियन कोर्ट्स कहिसंती जदि if of 100 years old or more then ताकू आमे sufficiently antique कहि परिबा आ ताकू गोटे ancient बोली कहि परिबा आ ताकू गोटे custom बोली भी कहि परिबा इंग्लिश लॉ हिसाब रे टाइम इमोरियल हो दरकार ओके दिस इज द इंग्लिश लॉ जोडा कि प्रिवी काउंसिल कोथले जे टाइम इमोरियल रे हबो चलथिबो पूरा काहार मन पडनथो जे मन पकोथो जे हां एमदा कस्टम ता अछि बट इंडियन कोर्ट टिके कहि दैछंती दैट यस इट इज जदि एतिकी वर्ष अछि ताले टाइम इमोरियल न हले भी चलिबो 100 वर्ष जदि हले भी चलिबो ओके एटा को रिट्रेट भी कराई माने बहुत जगह रे कहै छी गोटे होची देवियाना अच्छी वर्सेस चिदंबर 1945 जोथरे गोटे 25 ईयर ओल्ड कस्टम को सफिशिएंटली ओल्ड कस्टम को गलानी 25 ईयर ओल्ड कस्टम थिला ता कहले ना एटा सफिशिएंटली ओल्ड नुह सफिशिएंटली नॉट ओल्ड टू बी ए कस्टम कहले एटलीस्ट हो दरकार केते 100 एटलीस्ट 100 हेले ही हमें ताकू सफिशिएंटली ओल्ड बोली धरी पारी बा बुझियला ओके नेक्स्ट फर्स्ट गला कोन एंशिएंट पुराना हिता दरकार एंशिएंट माने पुराना हिता दरकार सेकंड होची कोन कंटीन्यूअस इट मस्ट बी कंटीन्यूअस कोन कहला if very ancient but not followed continuously means abandoned by people किछि टाइम रे people ताको abandon भी कर देछंती then it becomes obsolete abandon custom जदि abandon करा हैछि ताहले ताको आउ कस्टम रे धरा जिवो नै कंटीन्यूअसली से कस्टम ता फॉलो हिथिवा दरकार चाली थिवा दरकार ताहले ही हबो आपण ताको वैलिड कस्टम कहबे थर्ड certain okay it must be certain and not vague कोन थिया दरकार certain हेथिवा दरकार vague कस्टम हेले हबो नै वेग माने क्लियर नथिबो ओके खाली गोटे एलिगेशन कोथिबे जे हां कस्टम ता अछि सेमथि हबो नै क्लियरली थिवा दरकार जे यस इट इज एक्जिस्टिंग एंड दिस इज द कस्टम ओके इट मस्ट बी क्लियर सर्टेन एंड नॉट वेग ओके सर्टेन एंड क्लियर एंड नॉट वेग यदि वेग होची ताल ताकू कस्टम कहि परिबे नाही फोर्थ not unreasonable तमाने reasonable हवा दरकार unreasonable custom जदि होची ताले सेटा void को आजिवो ओके void custom बोली को आजिवो बोली कहूची ओके and what is reasonable actually differs from time to time से टाइम रे सतीटा भी रीजनेबल कस्टम थिला एबे थोड़ी रीजनेबल कस्टम एबे इट्स नॉट सो व्हाट इज रीजनेबल दैट वैरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड रिमेंबर इट शुड नॉट बी रीजनेबल अनरीजनेबल रीजनेबल हबा दरकार फिफ्थ नॉट इमोरल इट शुड नॉट बी इमोरल कस्टम गुडा को जदी हबो ताहले भी हबो नै जदी इफ इमोरल then also not valid okay like marrying
marrying at lifetime of husband, ये सब immoral. Okay, और भावन्तु adoptive parents जो माने adopt करूचंदी, adoptive parents यदि if pay money to biological parents, it is like a purchase. एमता जिस सबडा जदि रहिला ये सब immoral. But again, remember that standard of morality differs from time to time. Standard of morality differs from time to time and society to society. And society to society. Okay? It differs from time to time and society to society. Sixth. So, देखिया पड़िबो जे एक्चुअली सेटा कोन immoral नुह बोली देखिया पड़िबो. Next. Must not be opposed to public policy. Must not be opposed to public policy. यदि public policy को oppose करूथबो ताहेले भी ताकू आमे गोटे कोन करि परिबा नाही, ताकू आमे valid custom बोली धरि परिबा नाही. ओके, ताले आमे ताकू गोटे valid custom बोली धरि परिबा नाही जदि से public policy को oppose करू थिबो. It must not oppose to the public policy. That is also a rule. Okay, ता माने भाबंतु जे जदि गोटे आपण परमिट करूची कोठी जे सिंगल मदर अडॉप्ट करि परिबो आ गोटे छुआ को, then in that case that is opposed to public policy. और गोटे ट्रस्टी जदि ट्रस्ट करि परिबो, ट्रस्ट टाकू सेल करि परिबो, then that is opposed to public policy. Example लिख दियंतु trustee being able to sell trust property, able to sell trust property. Okay, ता माने if opposed to public policy, then also it is void. It must not oppose to the public policy. खाली public policy कोन, it must not oppose to the law as well. Must not opposed to law as well. Okay, law माने law को जदि oppose करूची, जेंति सती प्रथा एबे कोन सती प्रिवेंशन एक्ट आसिला परे, सती प्रथा प्रिवेंशन एक्ट आसिला परे कोन हला सेटा आउ सेटा ए लॉ टाकू टोटली वायलेट कला. So now it's not a valid custom anymore. Okay, now जेमती मने थिबो साबरीमाला वर्डिक्ट रो येटा की कहि परिबो जो कोन साइटेशन टा ना कोन साबरीमाला वर्डिक्ट रो कहितली देखिया की मन रखछि. So Young Lawyers Association. Very good. Young Lawyers Association versus कोन who state? Difficult part मन रखि, easy part मन रखिलो. State of Kerala. सेतरे जेमती कहितला जे एठी गोटे कस्टम एंड लॉ ऑफ लैंड भितरे आसिला कोन डिस्प्यूट. ओके, डिस्प्यूट ऑफ कोर्स एठी कहैतला जदि किछि कस्टम लैंड लॉ ऑफ लैंड को करिवो ताले से कस्टम गुडा को आमे अपोज टू लॉ बोली धरिबा. ओके, सो दैट्स व्हाई सेठी आपण ताकू कहि परिबे जे दिस इज नॉट ए वैलिड कस्टम. ओके, यस.
नाउ केमती कस्टम टाकू नॉर्मली प्रूफ करा जाए एति घेला हमरो रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम सातटा रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए वैलिड कस्टम नाउ हाउ ए कस्टम इज प्रूफ्ड प्रूफ ऑफ कस्टम कोन जदि गोटे कस्टम थरे रिकॉग्नाइज हे गला इफ कस्टम इज वंस रिकॉग्नाइज्ड जुडिशियली जदि जुडिशियली रिकॉग्निशन मिली गला को भी लॉ रे देन no further proof is required. Remember, थोड़े जदि proof है ये जी, then no further proof is required. Okay? किंतु जदि proof है ही नहीं, if no judicial recognition, जदि judicial recognition मिली नहीं, then burden of proof lies on the whom? Lies on who alleges its existence. जी कहूच जे सेटा एग्जिस्ट करछि बोली ताको ही प्रूफ करिया को पड़े जदि थरे जुडिशियली रिकॉग्नाइज हे जाइछि ताल तो किछ असुविधा नै किंतु जदि जुडिशियल रिकॉग्निशन मिली नाही ताहले जी एलेज करछि जे से कस्टमटा एग्जिस्ट करछि सीए ताको ही प्रूफ करिया को पड़िबो बोली कहूछि ओके नाउ कस्टम्स रो भी वेरियस काइंड्स एक्चुअली अछि काइंड्स जदि हमें देखिबा ताले तीनटा मेजर काइंड गोटे होची लोकल कस्टम जोटा की गोटे लोकालिटी रे थाए लोकालिटी और जियोग्राफिकल एरिया रे थाए इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन ऑल एंड सेकंड किछि थाए फैमिली कस्टम जोटा की मेंबर्स ऑफ फैमिली ऊपर थाए यूनिवर्सल कस्टम नॉर्मली फाइंड करिया डिफिकल्ट आउ would होची कास्ट और कम्युनिटी जो थे कि से मेंबर्स ऑफ कास्ट और कम्युनिटी ऊपर बाइंडिंग ओके आउ यूनिवर्सल कस्टम्स आर रेयर आपण बहुत कम पाइबे जे जोटा कि यूनिवर्सल कस्टम देबो वेरी रेयर टू फाइंड हमें मोर तो मन पड़ने गोटे एग्जांपल कोठी देई हबो बोली ओके सो एडा हला हमरो कस्टम्स सो हमरो एठी चारटा पढी गले कोन हमें एंशिएंट सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ दोज आर पढी देले हमें कोन श्रुति स्मृति डाइजेस्ट एंड कमेंटरीज एंड कस्टम्स सरी होला एबे जिबा हमें कोन मॉडर्न सोर्सेस को मॉडर्न सोर्सेस कते प्रकार कहितली तीन प्रकार वन इज judicial decision judicial decisions ताकू कोआ जाय कोन कोडा बेसिकली जज मेड लॉस गोटे डॉक्ट्रिन अछि ताकू कोआ जाय स्टेयर डिसीजेस माने कोन हु कैन से डज एनीवन नो स्टेयर डिसीजेस माने कोन These are judicial pronouncements of superior courts. Judicial pronouncements of superior courts. Okay? ताको precedent भी कहा जाए और precedents. Spelling भूल गए. Precedents भी ताको कहा जाए and it is the most important modern source. This is the most important modern source. Okay, and aku ame authoritative भी कहू binding भी कहू. These are authoritative and binding. Okay, Supreme Court decision Article 141 हिसाब रे throughout India binding समझी throughout India binding अच्छा Supreme Court decision is it binding on Supreme Courts No, sir. no throughout India but all other courts it's not binding on Supreme Court तार decision को काटी की किसी कर परियो एच असुविधा
नहीं ओके सेमती हाई कोर्ट्स करो बाइंडिंग all courts in that state so the high court ro nijor decision is it binding on that high court yes or no nijor decision da is it binding on that high court no again no okay high court jo chahibo taku bhi change kariki alga kiछि bhi kari paribo nijor decision ko but all other courts yes it is binding okay how gotte high court one high court ra decision is it binding on other high court no the answer is also no it only has persuasive value जदि चाहिए से ताकू देखि परिबे बट आपण कहबे ओडिसा रे जे मद्रास हाई कोर्ट रे या हेतिला हाई कोर्ट सेठी बाध्य न देखिया भाई क्लियर सर गला एटा कोन जुडिशियल डिसीजन सेकंड लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स जहाँ भी हमें कुछ लेजिस्लेशन और स्टैट्यूट्स ओके नाउ सेठी यदि अथॉरिटी व्हिच हैज द पावर टू मेक लॉज ताले सेमाने जदि किछि लॉ करूचंती then in that case they will be important and in fact modern times re legislation are more important okay जेमती 1955 रे आसला कोन हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिज एक्ट 1955 रे आसला सेतलो आसला परे ये ही गवर्न कला सब हिंदू कर मैरिज रिलेटेड जिंस को हिंदू मैरिज जहाँ भी है सब ये गवर्न कला ता पूर्वरु किंतु अलगा लॉज गुडा थिला जोडा गवर्न करथुला जेमति कि थिला ओटे थिला विडोज रीमैरिज एक्ट आ पूर्वरु थिला विडोज रीमैरिज एक्ट 1856 हिंदू वुमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937 ओके माने कोच 1935 अगरु कोन थिला हिंदू मैरिज वैलिडिटी एक्ट 1949 ये सब थिला ये सब जतले आसी तापर हिंदू मैरिज एक्ट आसीला परे एबे आउ समान गवर्न कर कि हिंदू मैरिज एक्ट गवर्न कला ओके संधि खाली हिंदू मैरिज एक्ट सिनी आउर गोटे आसी कोन हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 this is one this is two Hindu adoption maintenance act third hochi Hindu minority and guardianship act 1956 and fourth is Hindu succession act 1956 चारिटा को एटा डील करछि मैरिज एटा डील करछि कोन adoption of maintenance एटा डील करछि minority and guardianship एटा डील करछि succession ओके सब जाको डील करछि एंड एबे एबा को एग्जॉस्टिव एंड इनफैक्ट एगुडा भी हम कोर्स रे अछि चारिटा जिंस हम कोर्स रे अछि जोडा कि हमें ए जो इंट्रोडक्शन स्कूल से सब सरला परे ए चारिटा को ही हमें पढिबार अछि मेजर चारटा को जिंस जदी अछि अपार्ट फ्रॉम दिस sources and schools are these four acts which we will study Hindu marriage act Hindu adoption and maintenance act Hindu minority and guardianship act and Hindu succession act चारिटा जिंस अछि okay Salla, it is the most modern source of Hindu law. Salla. Third asuchi ebe kono justice, equity and
good conscience. Justice, equity, and good conscience. Okay. Now, this is also eta gote basic rule of law ame jodi कहबा basic rules of law. Okay. सेठी एटी केतळे अप्लाई करे when existing laws are silent. सेठी courts कौन करंती apply rational mind and principle of justice. Courts apply what? Rational mind and principle of justice, equity, and good conscience. Justice, equity माने कौन सब ठीक हवा दरकार. Good conscience माने from your good conscience you are making it. Okay. Now जोठी आपरो एमती ambiguous matter थाए जोठी rules are silent सेठी आपण करंती justice, equity, good conscience को apply करंती. One case you may write is Gurunath versus Kamlabai. Gurunath versus Kamlabai 1951. Okay, जो थरे कहिथिला जे yes, courts have authority to decide cases on the basis of justice, equity, and good conscience unless repugnant / inconsistent with any law or doctrine or theory of Hindu law. Okay, जदि किछि law नहीं, जदि किछि judgment law नहीं, तामने legislation नहीं, judgment law नहीं, और किछि theory भी नहीं, तासु जदि inconsistent हो नहीं, ताहले easily आपण कोन करि परिबे, आपण करि परिबे this you can apply justice, equity, and good conscience. Okay, ठीक अछि, बुझियला ना बुझियलानी. Okay, now सब टॉपिक पढ़ेला बारे तार क्वेश्चंस गुडा भी कोन आसी पारे because we are mostly concerned with questions गुडा आसी परिबो से गुडा को. One आसीबो पूरा डायरेक्ट आसीबो ancient and modern sources और डायरेक्ट पचारिबो sources जाई पचारिबो सेटा आपण डायरेक्ट लिखिबे सब जाको बोली कहिला. ओके, और छोटो छोटो जिंस रे शॉर्ट नोट्स बनै पारे, शॉर्ट नोट्स बनै पारे जेमति बनै देबो श्रुति रे शॉर्ट नोट, स्मृति रे शॉर्ट नोट. ओके, लेजिस्लेशन रे शॉर्ट नोट, धर्मशास्त्र रे शॉर्ट नोट. म खाली एमति एग्जांपल दोची, सबु थरे सबु गोटे गोटे शॉर्ट नोट हेई पारे, एमदी किछि नाही. कस्टम रे गोटे शॉर्ट नोट एमदी हेई पारे, और गोटे पर्टिकुलर जिंस गोटे थियोरी को नेकी जेमति कहि परिबो, जेमति म कहितली कोन, he who alleges custom must prove it comment. एमती भी किछि पचार देई पारे, एमती भी किछि पचार देई पारे, सेठी आपण कस्टम डिफाइन करी कि प्रूफ ऑफ कस्टम ए सब जिंस गुराको लिखिबे. सो मेजरली एमती आस पारे आइदर पूरा सोर्सेस और लिखि दबो एंशिएंट सोर्सेस कोन कि मॉडर्न सोर्सेस कोन कि बोथ सोर्सेस कोन, किंबा शॉर्ट नोट्स जो भी गोटे गोटे जहां भी पढिले से सबरु आसी पारे, और एमती किछि गोटे लाइन कहि कि कमेंट भी आसी पारे. क्विकली रिकैप करिवा कोन कोन आज पढले हमें. कहली मेजरली अनकोडिफाइड थिला आउ गवर्न होतला सदा बेले कोथरे आपण तांकर अनकोडिफाइड लॉ रे गवर्न होतला. तापरे yes, some certain laws were actually were codified later. Uniform Civil Code आसीबो जेबे आसीबो सेबे सब codified हे जाय पार. 1955-56 रे मेजॉरिटी codified हे जायथिला. सोर्सेस कोन, एंशिएंट मॉडर्न. एंशिएंट रे होची श्रुति, स्मृति, डाइजेस्ट, कमेंट्रीज एंड कस्टम्स. मॉडर्न रे होची जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन और जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियंस. श्रुति रे कोन, व्हाट वाज हर्ड,
सेठी वेदास और उपनिषद्स जहाँ कहउचंती जहाँ गॉड कहितिले जीसस को जहाँ से सुनितिले सेउडाक वेद कहितिले ऋग यजुर साम अथर्व उपनिषद 108 टा तादुरु 10 टा रु 13 टा होचंती फर्स्ट 10 टा 13 टा इंपोर्टेंट ओके 4000 बीसी रु 1000 बीसी भितर लिखा है स्मृति जोटा कि व्हाट हैज बीन रिमेंबर्ड सेटा मेमोरी ऑफ सेजेस जोटा कि से माने सुनी थिले से माने सुनी कि मन रखथिले जहाँ सेउडाक आउ अर्ली स्मृति और लेटर स्मृति अर्ली स्मृति को धर्मसूत्र लेटर स्मृति को धर्मशास्त्र धर्मसूत्र होची 800 रु 200 बीसी आउ सेडा होची धर्म सूत्र जोड़ा मु कहली मेन धर्मशास्त्र लिख दी जेटा मेन धर्मसूत्र तो लिख दी शास्त्र एटा होची धर्मसूत्र बा पढुतले एटा शास्त्र केमति हो मेन धर्मसूत्रस तो कौन गौतम बोधायन अपस्तंभ वशिष्ठ विष्णु हरिता धर्मशास्त्र एटा पोएट्री मैट्रिक फर्स्ट लिखा होतला तीनटा गोटे होची आचार व्यवहार प्रायश्चित मनुस्मृति डील करे आचार और प्रायश्चित व्यवहारटा नारद स्मृति रे यज्ञवल्क्य मनुस्मृति को ऑलमोस्ट टिके कॉपी कराई ओके मनुस्मृति मोस्ट स्टडीड एंड मोस्ट अथॉरिटेटिव सिस्टमैटिक एंड कोजेंट कलेक्शन अछि कांसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ रूल्स इंस्टीट्यूशंस ता ऊपर सेवरल कमेंट्री भी लिखा है यज्ञवल्क्य स्मृति 4th to 5th सेंचुरी रे बेस्ट कंपोज धर्मशास्त्र सुपीरियर वोकैबुलरी मनुस्मृति को जहाँ लिखा है ऑलमोस्ट सेही टॉपिक्स गुडा को सब जगह लिखिसंती खाली डिफरेंस होची मनु रे डिवाइन राइट ऑफ किंग थिला यज्ञवल्क्य रो से सब नाही नारद स्मृति तीनटा मेट्रिकल धर्मशास्त्र भितरु सेटा लास्ट टा एथरे एग्जॉस्टिव ट्रीटिज और सिस्टमैटिक थिला फर्स्ट लीगल कोड जोथरे की मोरल और रिलीजियस फीलिंग्स को एक्सक्लूड कराई थिला व्यवहार को डील करे तापर असला डाइजेस्ट एंड कमेंट्रीज जोथरे की स्मृति जेतु एम्बिगुअस और कॉन्फ्लिक्टिंग टू ईच अदर थिला सेटा इंटरप्रिटेशन करा गला आउ मनु यज्ञवल्क्य सूत्रे मेजर राइटर्स और कमेंटर्स अछंती आउ सेठी प्रिवी काउंसिल भी कहिथिला कॉन्फ्लिक्ट हेले आपण देखिया कथा का को कमेंटरीज को देखिया कथा तापर असला कस्टम ट्रेडिशन जोटा की सोसाइटी रे प्रैक्टिस होची सिंस टाइम इमेमोरियल 3 ईयर रे भी डिफाइन करिची कंटीन्यूअस और यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व हेतिबो लॉन्ग टाइम पई एंड ऑब्टेन द फोर्स ऑफ लॉ ताले रिक्वायरमेंट कोन एंशिएंट हवा दरकार इंडियन कोर्ट्स कहले 100 वर्ष रो अधिक हेले एंशिएंट हे जिवो कंटीन्यूअस हवा दरकार सर्टेन हवा दरकार नॉट अनरीजनेबल हवा दरकार नॉट इमोरल हवा दरकार must not be opposed to public policy must not opposed to law हवा दरकार ओके जंदी मु कहली सब साबरीमाला वर्डिक्ट ऐसा कहली प्रूफ ऑफ कस्टम नॉर्मल जदी जुडिशियल रिकॉग्नाइज हे जाईची ताले नो फर्दर प्रूफ कि जदी जो नो जुडिशियल रिकॉग्निशन ताले जी एलेज करची से प्रूफ करबो काइंड्स लोकल फैमिली कास्ट कास्ट कम्युनिटी और यूनिवर्सल मॉडर्न सोर्सेस कोन जुडिशियल डिसीजन जजमेंट लॉ स्टेट डिसीजंस रे कोन जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स और प्रेसिडेंट्स सेडा मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स सुप्रीम कोर्ट जेमति 141 रे बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन कोर्ट्स इन दैट स्टेट और ओटे हाई कोर्ट अदर हाई कोर्ट पर बाइंडिंग लेजिस्लेशन स्टैट्यूट होचंती नेक्स्ट टा किंतु रिसेंट टाइम्स रे सेडा को मेजर हे जाईची जेमति कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसेंस होची कोन बेसिक रूल्स ऑफ लॉ जेरे कि एक्जिस्टिंग लॉज आर साइलेंट कोर्ट्स एठी अप्लाई करंती रैशनल माइंड आउ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इक्विटी एंड गुड कंसेंस टू डू इट गुरुनाथ रे भी कहितला जे यस इट कैन बी डन आउ कहली जे केमतिया क्वेश्चंस आसी पारे ए टॉपिक बुझी हला एइंती करिया तो ना आउ किछि चेंजेस दरकार कि अलगा किछि वेरे करिया दरकार मते को एम सो सारिया तो होना ना Yes, sir, this is perfect. ओके ठीक अछि सो दैट्स इट आज स्कूल्स पढ़ाई थांती बट ये तो ऑनलाइन मोटे आउट अधिक पढ़ाया चाहूनी सॉरी तो बनी स्कूल समय नेक्स्ट फ्राइडे जले ऑफलाइन विल असेंबल मंडे रो तो असेंबल करिया बट विल स्टार्ट बीएनएसएस जेतेले नेक्स्ट हम कहथिल कोन फ्राइडे और सैटरडे हम हिंदू लो नबा सो फ्राइडे सैटरडे we will have offline classes of Hindu law. A week re Sunday we evening re we'll have one class as well. Next Sunday, I mean not tomorrow. Next Sunday we'll have one class in the evening as well. Okay, followed by some party. किसी गोटे खाया पिया भी होगा. Okay, ठीक है. Thank you all and I'll see you day after, that is on Monday offline. Please.
do come and we'll continue BNSS. Okay, thank you all. Bye.